Just to briefly introduce myself, I am Dr. Arslan and my specialization is in structural engineering. I am doing as HOD research at NUST School of Civil Engineering. And today I have been invited to share my experiences and some of the learning aspects related to outcome-based education system. Okay, so the today webinar, I have devised a few learning outcomes for the today's webinar. Like we define course outcomes, जैसे हम हर syllabus के शुरू में कहते हैं कि जी आपने CLOs define करने हैं. Course learning outcomes should be defined for each course, and similar to the course, you must have learning outcomes for each lecture. जब आप एक lecture देने जाते हैं तो आपको पता हो कि आपका ये लेक्चर किस CLO में कंट्रीब्यूट कर रहा है और इस लेक्चर के अपने लर्निंग आउटकम्स कैसे मैप हो रहे हैं किसी कोर्स लर्निंग आउटकम के साथ. So the learning outcomes for the today's webinar will include the key constituents of OBE module, followed with assessment and analysis practices being conducted for the program educational objectives, which are abbreviated as PEOs, program learning outcomes abbreviated as PLOs, and the course learning outcomes, which we usually call as the CLOs. Followed by, we will discuss about the continuous quality improvement CQI framework, because the essence of OBE is to implement CQI to have some sort of continuous quality improvement within the system as our program is maturing with the passage of time. So CQI is the basic need, and followed with we will be discussing about the design and assessment of, like your chairman said, the complex engineering problems, open-ended labs, and the problem-based learning, and especially their assessment based on the set of devised rubrics. If you have any questions, you can interrupt me in between the presentation, and we will discuss about your points, because this is more of an interactive session. If you will have some queries, you can stop me and we will discuss and we will tackle your queries in between the presentations in detail, so that most of the points are killed during the presentation. In the outline of presentation, we will be discussing first the difference in between traditional education, which we were practicing previously, versus outcome-based education, followed with the key modules, then to the CQI framework, followed with the introduction to PBL and OELs. So in traditional education system, you would have noticed that we had the process which was just inculcating our input, which is the student, and we were monitoring their progress till the time of graduation. जब एक स्टूडेंट हमारे पास से ग्रेजुएट होकर निकल जाता था, we were least bothered कि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, उसका जो फ्यूचर में उसको जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं वो हमारे करिकुलम में सही तरीके से एड्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे. सो ऑल दीज फेजेस दे वर लैकिंग इन आवर प्रीवियस ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम. And the second problem was that we were only focusing on the cognitive part of the curriculum. Cognitive हम आगे जाके कवर करेंगे. 3 ब्लूम्स लर्निंग डोमेन्स हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव, देन साइकोमोटर, एंड फोर्थ इज़ अफेक्टिव. कॉग्निटिव को हम कहते हैं रिमेंबरिंग, माइंड रिलेटेड है. साइकोमोटर स्किल ओरिएंटेड है, और जो आपका अफेक्टिव है वो एटीट्यूड बेस्ड है. So the traditional education system, it was prime focus towards the cognitive phase. 90 to 95% it was focusing on the cognitive phase. We had the labs, but what we were doing in the lab, that students were given least chance to operate the equipment at their own. So that's why their psychomotor skills were not that polished, which can be with the implementation of OBE in true sense. Also, the most ignored factor was, which was mentioned in the last line, that lack of emphasis on soft skills, which are needed in job, like communication skills, interpersonal skills, analytical skills, and working attitude. This was missing in the traditional system. And there was a recent survey, not recent, it was conducted in 2013 by National Association of Colleges and Employers. And you can see that how high rated the soft skills are, which were completely deficient in our traditional education system.
The first top three priorities which the employers seek to have in their employees are communication, honesty, followed with the teamwork skills. And the academia was ranked on the 17th rank. So we are not saying that academia is not important, but academia is equally important alongside the polishing or refining of द स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल्स. सो इसमें जब हम कहते हैं कि 3 डोमेन्स कवर कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव पार्ट. So affective is all about the soft skills of students, and when we are assessing and when we are making certain KPIs and when we are improving their soft traits, so basically we are making our graduate more marketable, or we are raising the employability of our graduates. This phenomena has been inculcated in this outcome-based education system, and you can see that now alongside these short-term assessments which were included in the traditional system till here, we were restricted in traditional system. Now we are also focusing on this long-term phase in terms of the evaluation or monitoring of students after his or her graduation. We usually have program education objectives devised which are assessed through employer or alumni feedbacks, and those feedbacks are taken are basically completed after their graduation for a period of 3 to 5 years, and then an analysis is run according to the feedback, and based on that analysis, if our key performance indicators are not satisfied, we usually suggest some sort of corrective actions to invoke in the program, so that the quality of program on cohort level should be improving with the passage of time. So what assessments are in terms of OBE? So in terms of OBE, we have the indirect evaluation in terms of exit survey forms, in terms of alumni and employer forms, followed with the more robust assessments which are now conducted in laboratories in terms of rubrics, and we are giving more chances to the students so that they have adequate hands-on practice training while operating their experiments in the lab. This is a pictorial, you can say, comparison in between traditional and the OBE based education. In the first picture, the brain is just dosed in with the cognitive phase, and nothing psychomotor or attitude based reflection was there in the curriculum. But in the second phase, we are also making students cognizant with the requisite skill, so that he is adequately prepared to go into the market and operate accordingly. Basically, the story of OBE started back in 2013-14 when this transformation was taking place. The aim was to recognize Pakistan as full signatory to Washington Accord, so that our engineering graduates, they are internationally recognized as an accredited to Washington Accord, and they had equivalent chances of jobs as the students of any other countries which are already signatory to WA. So the WA panel visited Pakistan in 2016. They also visited our institute as well. The panel composition is given in the slide. And after their successful visit in their General Assembly meeting, Pakistan was declared as full signatory to Washington Accord on June 2017. So after that, now we are lying in, Alhamdulillah, in this list of final signatories from provisional list. To maintain our status in the list of final signatories, because now there again second compliance visit is pending, which will be conducted in 2023, and PEC is also preparing for that. And the task with PEC is to transform maximum of the programs of engineering programs of Pakistan accredited on outcome-based education, or you can say level 2 accreditation. For that level 2 accreditation, the limitation for the program is that you will not be accredited unless you have the implementation of outcome-based education in true spirit. So, so this is a sort of compulsion to us that we have to adopt
this system, besides its benefits, it is adding something into the work, but the automation can make it easy to have the implementation of this system in sustainable format. If we discuss the key components of outcome-based education, so this is the basic building block. You can say OBE base stone is course learning outcomes, CLOs, and they contribute towards the attainment of program level learning attributes which you have designed for your program. Then these PLOs, they are mapped or aligned with the program educational objectives, and the topmost is your program mission. So from the courses we are traveling towards the mission of your program. So ultimate aim is to attain whatever we have designed as the program mission. So the accomplishment is done through all these three basic modules, which includes PEOs, PLOs, and the CLO. And this assessment should be a quantitative sort of assessment or evidence-based assessment. And that's what the OBE insists, that we should have devised framework, evidence-based framework for assessment and analysis of each outcome-based education component. For the mission, you will have noticed that there is a mission of your university followed with the mission of your department, and usually those people who are writing or developing your self-assessment report, they would be mapping the two missions, that your departmental mission should be aligned with the mission of university, and it must be known to the stakeholders. It is well published. Who are the stakeholders for the program? They are your students, you as the faculty, your industry stakeholders, followed with the alumni and the parents of your students. They are all the stakeholders, and they should be knowing the mission of your program. That's why the OBE team or the PEC team emphasize that your mission must be well publicized. It should be published in the corridors, it should be published on your department web and the university web as well. Second component is program educational objectives, which is enforcing your program mission. So basically PEOs are some statements which which are being monitored by the department after the graduation of a student, and the maturity period for the evaluation of program educational objective, it is kept in between 3 to 5 years. So it is flexibility with the institute that they can define the maturity period for the evaluation or the analysis of program educational objectives. It can be 3, 4, or the 5 year. And when you are writing PEOs for the program, you would have already written the program educational objectives for the program. But while writing these PEOs, you must be cautious that these PEOs, they are consistent with the mission and the vision of the institute. The number of statements should be limited and manageable. You should not design like कि हम 8 program educational objectives design कर लें, फिर उनकी mapping, उनकी evaluation, उनकी monitoring हमारे लिए एक बहुत बड़ा challenge बन जाए. So manageable statements, like not less than 3, not more than 5. So in between we can design our PEO statements. They should not be simply restatement of outcomes, like आपकी PEO, or like PEO is a superior thing, PLO is the inferior thing which is contributing towards the attainment of program educational objectives. तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपका अगर एक PLO इंजीनियरिंग नॉलेज का है तो आपकी PEO की एक स्टेटमेंट सिर्फ इंजीनियरिंग नॉलेज को मैप करे, फिर अगली एनालिसिस को, तीसरी design and development of solution को. You must have a PEO showing superiority over the PLOs. Like आपकी PEO statement multiple PLOs को map कर रही होगी. Single PEO statement should be stated such that a graduate can demonstrate in their career. इस तरह की स्टेटमेंट आपने डिज़ाइन करनी है कि वो जो 3 से 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड हमने रखा है उसमें वो प्रॉपर्टी सामने आ जाए. लाइक वो जो भी हम एट्रीब्यूट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, its reflection must be matured by that time.
One more thing which is said about the PEOs that they must be designed in a smart way. Smart means they must be specific, measurable, achievable, result oriented, and having a set time frame. There are three examples of the PEOs like इसमें जो आपका पहला PEO है ये उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को कवर कर रहा है, सेकंड उनके सोशल एट्रीब्यूट को, थर्ड उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट या लाइफ लॉन्ग लर्निंग परसूट्स को कवर कर रहा है. सो दिस इज अ बैलेंस्ड कवरेज हाउ यू विल बी गोइंग टू design your PEOs so that they because they have to be mapped with all the 12 program learning outcomes. So आपने इस तरह के डिज़ाइन करने हैं कि आपके सारे 12 PLOs उन 3 या 4 या 5 PEO स्टेटमेंट्स की रिफ्लेक्शन में नज़र आ रहे हैं. प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को जो स्टूडेंट्स में हम इम्पार्ट करते हैं वो आपके करिकुलम से इम्पार्ट होता है. करिकुलम से कैसे आता है? बेसिकली योर CLOs आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स प्रोग्राम लर्निंग आउटकम, क्योंकि आपने कोर्स आउटलाइन में देखा होगा योर CLO स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज मैप्ड विद अ प्रोग्राम लर्निंग एट्रीब्यूट, फिर उसके टेक्सोनॉमी लेवल्स डिफाइन होते हैं. सो ये जो CLOs और PLOs की मैपिंग है, ये सारे के सारे PLOs फर्दर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स योर program educational objectives, and these program educational objectives then are continuously monitored in terms of indirect surveys, which are employer survey and alumni survey over the period of 3 to 5 years of after graduation of your students. और इसके analysis की base पे फिर हम ये predict करते हैं कि हमारे students की जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो किस तरह की जा रही है, हमारे स्टूडेंट्स फील्ड में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके फीडबैक के ऊपर हम फिर जो भी मॉडिफिकेशंस होती हैं वी इनकलकेट दोज मॉडिफिकेशंस इन आवर करिकुलम सो दैट आवर फ्यूचर बैचेस दे आर मोर वेल प्रिपेयर्ड कंपेयर टू आवर एग्जिस्टिंग बैचेस. सो एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की साइकिल चल पड़ती है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉन्टिन्यूस improvement in the quality of your product with the passage of time. So program educational objectives for the PEOs, we have the data collection yearly made, evaluation and review is made 4 years after the graduation of each batch. Like PEOs का जो maturity period है वो 3 साल भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी. हमने अपने स्कूल के लिए 4 साल रखा हुआ है, तो 4 साल के बाद हम उस डेटा का एनालिसिस करते हैं कि उसमें से हमें क्या पोटेंशियल करेक्टिव एक्शंस मिले हैं जो हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करें और अपने प्रोग्राम की क्वालिटी को इम्प्रूव करें. सो जो भी एनालिसिस होता है, जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं, उनके लिए एक हायरार्की होगी. वो आपके स्कूल में भी है कि एक क्वालिटी मैनेजमेंट सेल होता है या रिव्यू पैनल होता है. लाइक जो भी एनालिसिस होगा वो किसी एक बंदे ने रिव्यू के बाद इम्प्लीमेंट नहीं कर देना, पूरी की पूरी एक टीम की हायरार्की होती है. फ्रॉम LQEC means from Quality Enhancement Cell to Department Board of Studies to Faculty Board of Studies to if the change is major, so it will be going to University Curriculum Review Committee and the Academic Cons. और जो PEOs की इवैल्यूएशन हो रही है वो 2 सर्वे फॉर्म से हो रही है. इनडायरेक्ट इवैल्यूएशन, दैट इज एम्प्लॉयर सर्वे, एंड द अलुमनाई सर्वे फॉर्म. दिस इज़ द हायरार्की ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी. सो जो एम्प्लॉयर और अलुमनाई फॉर्म से हम असेसमेंट कर रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की. सो इन दैट असेसमेंट वी नीड टू डिफाइन सर्टेन KPIs. लाइक एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो तो हम पास होने के लिए कोई KPI सेट करते हैं कि 50 इज़ द पासिंग मार्क, 33 is the passing mark out of 100. Similar, we need to define a KPI for the statements of program educational objective. एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने शेयर कर दिया कि अगर आपके PEO की स्टेटमेंट ये है तो नीचे आपने उसकी स्टेटमेंट के KPIs डिफाइन करने हैं. लाइक ग्रेजुएट्स विल बी हाईली कॉम्पिटेंट एंड एम्प्लॉयबल, demonstrating sound knowledge and skills. So the first KPI which is coming through alumni survey, it is saying more than 65% of graduates they are employed. At least 50% of respondent employers are satisfied with knowledge and skills of employed graduates. At least 70% of graduates give positive feedback on knowledge and skills imparted. So ये हमारे KPI हैं. अगर ये मीट नहीं होंगे we will have to take some corrective actions, और वो corrective actions भी हमने कुछ जेनेरिक प्रपोज्ड किए हुए हों कि जो कि रिव्यू कमेटी फिर उसको देखेगी कि जो हमारी डेफिशिएंसी आ रही है
वो एग्जैक्टली उसकी रीज़न क्या है और इस पर करेक्टिव एक्शन कौन सा अप्लाई हो। Excuse me, Dr. Arslan, sorry to interrupt. Uh, For the direct assessment, we assess the PEOs through the PLO attainment. But for the indirect assessment, like you said, you have two survey forms. One is the alumni survey, the other employer survey. But there's another survey that we conduct, internship survey. Because before we used internship survey form also as an indirect assessment tool for the attainment of PEOs. But now in our latest academic council, they have deleted that, the internship survey form. So could you please elaborate on that one? ओके, फॉर द पीईओज देयर इज़ नो डायरेक्ट असेसमेंट, लाइक पीईओज को हम कभी भी डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते। जो आप कह रहे हैं ना पीएलओ से उसकी असेसमेंट हो रही है, वो असेसमेंट नहीं है। जो मैंने पीछे भी चार्ट दिखाया ना, इस पीईओज को जो हम स्टूडेंट्स में इम्पार्ट कर रहे हैं, बेसिकली पीएलओज दे आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ पीईओज by successful accomplishment or successful passing of program learning outcomes. We are ensuring that we have trained our student with requisite skills so that he can operate in a successive position or in a promising position in his related sort of domain. सो यहाँ तक तो हम जस्ट क्लेम कर रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट को मार्केटेबल बना दी है, ये असेसमेंट नहीं है। ये हमारी पीएलओज़ की असेसमेंट थी जिसकी बेसिस पे हम कह रहे हैं कि हमने पीओज़ इम्पार्ट कर दी हैं। जो पीओज़ की असेसमेंट होगी वो हमेशा इनडायरेक्ट होगी, वो एम्प्लॉयर और एलुमनाई सर्वे से हो रही है, और इसका जो मैच्योर डेटा है वो हमें बता रहा है कि हमारा स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन द फील्ड। Your question regarding internship feedback, internship is usually because it is now mandatory from Pakistan Engineering Council. So usually students have to do their internships during their 4 year graduation period at the department. So that internship can be considered as an indirect tool for the attainment of program learning outcomes, not the program educational objectives. सो पीएलओज़ के लिए हम उसको कंसिडर कर सकते हैं अलॉन्ग साइड एग्जिट सर्वे फॉर्म, लेकिन पीईओज़ के लिए वो नहीं होगी। और पीएलओज़ में भी जब दो लेवल्स पर सेग्रीगेशन जाएगी, इंडिविजुअल और कोहॉर्ट, तो हम इंडिविजुअल असेसमेंट में उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इंटर्नशिप का हर स्टूडेंट का डेटा आना और हर एक को एक नेचर की इंटर्नशिप मिलना वो बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है। सो हम उसे कोहॉर्ट लेवल पे देखते हैं कि उससे जो कोहॉर्ट पे पीएलओज़ की हमने सीक्यूआई रन करनी है वो हम करें, प्रोग्राम लेवल पे उसका सीक्यूआई रन करें, प्रोग्राम लेवल पे वो डेफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करेगा, इंडिविजुअल उससे अफेक्ट ना हो, बिकॉज इंटर्नशिप नेचर वेरीज फ्रॉम individual to individual, and we just want to expose them with sufficient field practices before they go into the market. Is it clear? Yes, sir. Yeah, it's clear. Okay, so this is a sort of a template for the employer survey feedback. Like we have a form in which we design a set of questions. While designing the set of questions, please keep in mind that the number of questions should be reasonable. You should not like initially when we designed this form, we had 16 to 17 questions so that we can cover all the aspects of PEOs. But later on we realized that the more number of questions there will be, the lesser response you will be getting from the industry reps. So then we redesigned this form and we have reduced it only to the 7 questions, and then these 7 questions were mapped with the program educational objectives, how we are taking the assessment indirectly from this particular survey form for the design PEOs. In our case, we have 4 PEOs, and the PEO 4, because it is related with the professional development skills or lifelong learning, it is coming directly through the alumni survey. So that's why it is not mapped in this particular phase. In case we are not successful in attaining the PEOs as per the defined KPI, हमने KPI रखा कि हमारे 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होंगे, लेकिन सर्वे से हमें पता लगा प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है ही नहीं। जो हमें एम्प्लॉयर बता रहा है उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स वो हैं ही नहीं जो हम चाहते हैं। 60% उसको 3 से कम रेट कर रहे हैं इस फॉर्म को। बेसिकली आपने देखा होगा कि इसमें एक स्केल लाइकर्ट स्केल के ऊपर है, लाइक 1 to 5 इज़ द स्केल विच इज़ बीइंग डिफाइंड फॉर द सर्वे फॉर्म।
सो जो इसका KPI भी डिफाइन होता है वो ऐसे ही डिफाइन होगा कि 60% ऑफ स्टूडेंट्स दे आर रेटिंग दिस फॉर्म 3 एंड अबव, लाइक 3 से नीचे कोई नहीं दे रहा। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसे 0 से 4 करते हैं, 1 से 5 करते हैं, 0 से 8 करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसके कितने लेवल्स डिफाइन करते हैं और उसका KPI क्या डिसाइड किया हुआ आपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर। इन केस द KPI इज़ नॉट मेट, so the proposed corrective actions could be either in terms of revision of curriculum or strategies। अब प्रॉब्लम PEOs के एंड पे है, लेकिन उसकी जो रिफाइनमेंट हो रही है, करेक्टिव एक्शन जाके करिकुलम पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, बिकॉज PEOs दे आर बीइंग contributed from the basic stones which are PLOs and the CLOs, क्योंकि उन्हीं से contribution आपके PEOs में आ रही है। So you will be going to review your curriculum, review of assessment method, में भी आपके जो सर्वे फॉर्म्स हैं वो उस मॉड्यूल को एडिक्वेटली कवर नहीं कर रहे। KPIs को भी आप रिवाइज कर सकते हैं, PEOs के स्टेटमेंट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं इफ़ यू फील लाइक कि द प्रॉब्लम लाइज विद द स्टेटमेंट ऑफ PEO। और जो भी आपके चेंज होगी इट विल फॉलो द हायरार्की ऑफ योर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, then it will be implemented into your department, and this is the CQI framework for the program education objectives। प्रोग्राम लर्निंग एट्रीब्यूट्स जो बात की थी, प्रोग्राम लर्निंग एट्रीब्यूट्स अब वो एट्रीब्यूट्स हैं विच यू विल बी इंश्योरिंग इनटू योर ग्रेजुएट्स बाय द टाइम ऑफ देयर ग्रेजुएशन। यानी जब आपका स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी छोड़ के जाता है, यू हैव टू इंश्योर कि आपने ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उसमें सक्सेसफुली इम्पार्ट कर दिए हैं। सो व्हाट आर दोज 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स? यू ऑल विल बी वेल फेमिलियर विद कि ये 12 एट्रीब्यूट्स हैं जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने हमारे लिए सेट किए हुए हैं। इन 12 से आपने आगे जाना है, मोस्ट वेलकम, लेकिन आप इन 12 से कम नहीं जा सकते। Recently they are thinking of merging PLO 6 and PLO 7 together, like इंजीनियर एंड सोसाइटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ये मर्ज करने का सोच रहे हैं। तो मे बी ये 11 हो जाए, लेकिन अभी तक ये 12 मिनिमम है। एंड वी नीड टू मैप ओवर इंटायर करिकुलम विद दीज 12 प्रोग्राम एट्रीब्यूट्स while taking care of their distribution in cognitive, psychomotor and the affective phase। सो ये आपके जो PEOs हैं और उनके PLOs के दरमियान मैपिंग है। अब आप देख लें कि एक PEO जो है वो मल्टीपल PLOs के साथ मैप हुआ है, बिकॉज PEO इज़ अ सुपीरियर थिंग। सो उसकी कई PLOs के थ्रू से कंट्रीब्यूशन आ रही है, और आपके जो कई PLOs हैं वो सिंगल PEO को मैप कर रहे हैं। प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स की जो असेसमेंट है, नाउ इट इज़ बीइंग डन थ्रू कोर्स लर्निंग आउटकम्स। CLO से कैसे होती है? दिस इज़ डायरेक्ट इवैल्यूएशन विच इज़ बीइंग डन थ्रू द CLOs। सो CLOs में आपके जो कोर्सेज के जितने भी CLO डिफाइन है, आपने देखा होगा उसके आगे एक मैपिंग लिखी होती है, CLO टू PLO मैपिंग, कि आपका जो लाइक कोई स्ट्रक्चरल एनालिसिस का कोर्स पढ़ा रहा है तो जो उसका CLO है वो किस प्रोग्राम लर्निंग आउटकम को मैप कर रहा है। ज़ाहिर बात है, एनालिसिस का कोर्स है तो वो PLO 2 को मैप कर रहा होगा, प्रॉब्लम एनालिसिस को। सर्वे का कोर्स है, उसमें आप कोई मॉडर्न टूल पढ़ा रहे हैं तो वो PLO 5 मॉडर्न टूल यूजेज को मैप कर रहा होगा। देयर इज़ ऑल्सो एन इनडायरेक्ट असेसमेंट विच इज़ बीइंग डन थ्रू सर्वे फॉर्म्स। अब इस सर्वे में आपके दो सर्वेज आ सकते हैं, विच इज़ एग्जिट सर्वे फॉर्म एंड द इंटर्नशिप फीडबैक फॉर्म। इंटर्नशिप फीडबैक फॉर्म, एग्जिट सर्वे फॉर्म, अगर आप इसको कोहॉर्ट लेवल की इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा ठीक है। इंडिविजुअल पे अप्लाई करें तो उसमें थोड़ा सा इनजस्टिस का चांस ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। So program learning outcomes, they are evaluated at the end of each academic semester through CLOs. They are being analyzed and evaluated after the end of each semester. In case we are deficient in terms of KPI, then the corrective actions are invoked. डायरेक्टली evaluation courses से हो रही है, ये जो आपको मॉड्यूल नज़र आ रहा है। indirect evaluation is being done from internship feedback and the exit survey। Again, the KPIs are defined for the program learning outcomes at cohort as well as at individual level। cohort पे हमने इसका 60% रखा हुआ है। Its flexibility with the institute के वो इसका कोई भी
KPI डिफाइन कर सकता है, इंडिविजुअल के लिए क्या करना चाहता है, कोहॉर्ट के लिए क्या करना चाहता है, लेकिन उन दोनों का करेक्टिव एक्शन डिफरेंट होगा। अगर आपका एक PLO फेल होता है on cohort level, the defined corrective action would be different. For an individual, it will be different. Similarly, for the indirect evaluation, हमने जो रखा हुआ है, it is 60% of students they attain score 3 and above on the scale of 1 to 5 for mapped PLOs. Similarly for the exit survey form, so you can keep it in your way। और इसमें आप देखेंगे तो individual और cohort की bifurcation नहीं है, because indirect is only related with the cohort assessment of your PLO's module. In case your PLO is failed on cohort level, अगर cohort पे failure है, it means program का failure है। program के failure में the corrective actions which were proposed are review of teaching and learning processes, review of PLO's assessment methods, reassessment of courses related to PLO's या CLO PLO remapping भी की जा सकती है, करिकुलम रिवीजन, रिव्यू ऑफ लैब एंड इक्विपमेंट फैसिलिटीज़। आपके लेबॉर्ट्री में कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे आपका डायरेक्ट CLO मैप हो रहा है और वो स्टूडेंट को उतना हैंड ऑन एक्सपीरियंस ही नहीं मिल रहा, दैट्स व्हाई दे आर लैकिंग इन दैट पर्टिकुलर CLO। So this could also be a possibility. Facility and infrastructure can also be a possibility. या आपके KPIs बहुत ज़्यादा आपने रख दी हैं तो वो KPI को आप कम कर सकते हैं, बहुत कम रखती हैं, हमेशा 100% अटेनमेंट आ रही है तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ CQI। redefining or improvement of the PLOs and all the changes will be communicated through QMS for implementation। इंडिविजुअल के लिए दो सिनेरियोज डिफाइन किए हुए हैं कि अगर एक बच्चा किसी PLO में फेल होता है सो आपने इमीडिएटली उसकी उसको उसकी रिकवरी नहीं करवानी थ्रू सम सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड असाइनमेंट। यू विल हैव टू रिव्यू कि आपने उसका KPI क्या डिफाइन किया है। अगर आपका KPI 50% है, इट मीन्स कि जो PLO 1 से मैप्ड CLO हैं, अगर वो 10 CLO हैं तो वो अगर 5 भी पास कर लेगा तो उसका PLO पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डिफाइंड KPI। मीन्स एनालिसिस में से अगर 5 कोर्सेज में उसने एनालिसिस का CLO पास किया है 10 में से तो उसका एनालिसिस पास हो गया है। अगर 10 में से वो 4 में करता है, इट मीन्स नाउ ही इज़ डेफिशिएंट इन द एट्रीब्यूट ऑफ प्रॉब्लम एनालिसिस एज पर योर सेट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो लिखा हुआ है, इफ़ फेल्ड PLO इज़ नॉट रिपीटेड इन अपकमिंग कोर्सेज academic branch to arrange independent study or special assignment and evaluation through HODs to recover this particular deficiency। If the failed PLO is repeated in upcoming courses, अगर रिपीट हो रहा है, उसके 10 चांस कंप्लीट ही नहीं हुए, उसने 8 में से 4 क्वालिफाई कर लिए हैं, अभी 2 चांस रहते हैं, एक उसने पास करना है, तो उस केस में हम काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट की कि आपके इन सब्जेक्ट्स में दोबारा एनालिसिस का जो CLO है वो असेस होगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड ट्राई टू क्वालिफाई योर प्रोग्राम लर्निंग एट्रीब्यूट टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ स्पेशल और इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। अब इसके बेसिक स्टोन की तरफ आ जाते हैं। कोर्सेज जिसमें हमने कोर्स लर्निंग आउटकम्स डिफाइन किए होते हैं विच आर अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। So the program ensures that each student has achieved all PLOs to acceptable level. This is done by assessment of course learning outcomes। आपके ने देखा होगा आपके कोर्स के कुछ ना कुछ आउटकम्स लिस्ट हुए होते हैं आउटलाइन के ऊपर। द इंस्ट्रक्टर डिफाइंस लेवल ऑफ लर्निंग फॉर ईच आउटकम। जब भी आपको कोई कोर्स मिलता है, इट इज़ योर प्राइम ड्यूटी टू रिव्यू दोज लर्निंग आउटकम्स। जब कोर्स मिलता है और जब आप उसे पढ़ा चुके होते हैं, पहली दफ़ा में आपने ये देखना होता है कि इसकी स्टेटमेंट में, लेवल डिफाइनिंग में, टेक्सोनॉमी में आपकी अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो आप HOD को कम्युनिकेट करके उसको मीटिंग के थ्रू से, जो भी आपकी QEC की मीटिंग होती है, उसे रिफ़ाइन करवा सकते हैं। अगर कोर्स पढ़ाने के बाद आपको लगता है कि नहीं, इसमें जो एक CLO है वो तो सिर्फ एक टॉपिक से रिलेट कर रहा है और जो एक टॉपिक एक CLO से, बाकी पूरे का पूरा सिलेबस दूसरे CLO में जा रहा है, सो इस CLO में लोगों के ग्रेड्स इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि वो टॉपिक ही एक टॉपिक है, उसमें कोई अच्छा परफॉर्म कर ले, कोई बुरा कर ले, तो ही इज़ गिविंग एडिक्वेट मार्जिन फॉर दैट। सो दैट्स वाई आप उसको कोर्स पढ़ाने के बाद अपने जो पोस्ट कोर्स रिपोर्ट लिखते हैं या कोर्स रिव्यू रिपोर्ट, उसमें
comment कर सकते हैं कि this revision is mandatory in the future offering of this course, that this CLO must be rationalized to cover the adequate syllabus of the offered course. तो इसकी जो revision है वो 2 cycles में होती है, at the start of the course, at the end of the course. Assessment is carried out via various methods such as quizzes, assignments, projects and exams. जब आप एक्शन वर्ब जब आप CLO की स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं तो एक कोर्स लर्निंग आउटकम के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं. द फर्स्ट कंपोनेंट इज दैट इट मस्ट हैव एन एक्शन वर्ब. Second component is it should be conditioned to some sort of like उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन ऐड हो सेक्शन वर्ब के साथ. अगर कंडीशन नहीं होगा तो आपके डिफाइन स्टेटमेंट थोड़ी सी वेग लगेगी. और इसके साथ साथ उसमें कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क भी हो कि आपका सेटिस्फैक्ट्री लेवल इस CLO की अटेनमेंट से रिलेटेड क्या डिफाइंड है. सो अभी अगर एक स्टेटमेंट को देखें, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट स्टेटमेंट इज describe the principles used in designing so and so. So this statement is now just containing action verb, condition is missing and the standard is missing. So उसकी जो statement है वो आपको complete नहीं लग रही होगी. Similarly for the second statement, evaluate the strengths and weaknesses of like again it's an incomplete sentence. इसमें नीचे ये भी लिखा है कि वेल रिटन वर्ब्स मस्ट बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल. जो आपने वर्ब यूज़ करनी है. अब डिस्क्राइब और इवेलुएट बड़ी डिफाइंड सॉर्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स हैं. On the contrary, if you are using appreciate, know, learn, aware, familiar, understand, तो वो थोड़ी सी वेग हो जाती हैं, इतनी tangible नहीं रहती. So that's why try to avoid using these action verbs. Try to have more like tangible sort of specific sort of action verb while defining your CLO, and it must contain action verb, condition and the standard. सो इसी एक्शन वर्ब इसी CLO को अगर हम एक्शन वर्ब प्लस कंडीशन असाइन कर दें. सो दिस वाज द प्रीवियस कोर्स लर्निंग आउटकम व्हिच वाज ओनली कंटेनिंग एन एक्शन वर्ब. In the second, we have added condition to the CLO. Orally describe the principles used in designing X. Now it is containing verb and condition, so it is a bit better, but it can be made more complete with the addition of standard. Similarly, design a beam. Design a beam using Microsoft Excel. So design a beam was only containing action verb using Microsoft Excel design template. So you have added verb with a condition. Followed with the third criteria, which is standard. So now your statement, final statement will be orally describe the 5 principles used in designing so and so. Now it is containing 5 is the standard, describe is the action verb, orally is the condition. Similarly, design a beam using Microsoft Excel, and design a beam using Microsoft Excel based on so and so standard. So all these 3 attributes, when they merge together, your CLO statement becomes more specific while inculcating all the 3 components of a course learning outcome. If one component will be missing, like standard, it can be a better statement of a CLO, but it can be made more appropriate by adding some sort of standard, while only containing verb will make it confusing. This is an example. Students should be able to design research. Again, it contains an action verb, no condition and standard is there. Students should be able to independently design and carry out experimental and correlational research. Now it is containing the condition, and the standard would be students should be able to independently design and carry out experimental and correlational research that yields valid results. So now it is containing all the 3 components: action verb, condition and the standard. After defining the statement for a CLO, as a faculty member, you need to review that which type of Bloom learning domain is assigned to that CLO. Bloom learning domain, I already briefly explained, like
There are three Bloom learning domains. One is cognitive, then affective, then psychomotor. Cognitive is mind, affective is attitude, psychomotor is skill. So this is distribution of your curriculum. For engineering, we have 70% curriculum in the cognitive phase, followed by the 30% distributed in psychomotor and affective phase. While if this would be the curriculum of technology discipline, so in that case, your most of the curriculum, like 50%, would have been psychomotor, and the rest distribution was for the cognitive and affective phase. Just an example, I have included these CLOs for the analysis course, which is being taught here in our department. So for structured analysis, you can see that in the initial we have statement containing action verb and the condition, followed with the defining of its domain, that this is a cognitive domain CLO, with the defined taxonomy level. Taxonomy level is the Bloom's, I'll explain to you that there are 6 levels for the cognitive domain. So this is analysis mapped with the 4th taxonomy level in cognitive domain, and its PLO mapping, which is 2, that is problem analysis. So these are the 6 different domains, taxonomies for the cognitive domain as defined by the Benjamin Bloom. You can see the highest level is creation. Creation means ke, like जो highest 6 level है, we can expect it from our PhD students, because जूनियर लेवल पे हम इतने हाई लेवल्स पे कॉग्निटिव में यूजुअली नहीं जाते. वी रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू द 5th लेवल. सो फर्स्ट इज़ नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, जिसे डिज़ाइन भी कहते हैं, देन इवैल्यूएशन. सो व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग अ CLO, जब आप एक CLO डिज़ाइन करते हैं तो आप जब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सो यू नीड टू नो दैट कि ये वाला जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिलेबस के किस हिस्से से है, और इसमें आपने किस CLO के साथ इस सवाल को मैप करना है. सो जिस CLO से वो सवाल मैप हो रहा होगा, यू नीड टू असाइन दैट स्पेसिफिक एक्शन वर्ब, रेलेवेंट एक्शन वर्ब इन द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन ऑर्डर कि आपका जो आप उसमें पूछ भी रहे हैं वो भी उसी लेवल का पूछें जिसका आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वाइल डिज़ाइनिंग द कोर्स. अगर मैंने एनालिसिस के कोर्स में 4th लेवल का CLO डिज़ाइन किया है, तो मैं उनसे 6th लेवल का सवाल नहीं करूँगा क्रिएशन का. सो आई विल बी डिज़ाइनिंग द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन CLO, which is analysis 4th level. So the action verbs that could have been used will be analyze, categorize, compact, contrast, differentiate, discriminate, outline. So जैसे जैसे आप हाई चले जाएंगे इसके एक्शन वर्ब्स उसके अकॉर्डिंगली रिवाइज होते जाएंगे. अगेन कॉग्निटिव के लिए ये आपके जो 6 लेवल्स हैं उसके एक्शन वर्ब्स इसमें डिफाइन हुए हैं. सो यू कैन यूज़ द चार्ट्स एंड use the appropriate action verb for the map question to a specific course learning outcome. For the psychomotor domain, we have 7 levels. Psychomotor में perception से start हो रहा है till organization. Normally, engineering disciplines में it is usually recommended to restrict yourself to the 3rd level of psychomotor domain. इससे ज़्यादा आप ओपन एंडेड लैब वगैरह में जा सकते हैं, लेकिन उसके बगैर 4th लेवल में जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें आप कह रहे हैं कि मैकेनिज़्म के एक स्टूडेंट अपना मैकेनिज़्म डिवाइस कर रहा है कि एक्सपेरिमेंट का, और उस मैकेनिज़्म की बेसिस पे वो रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है. जबकि हमारे ज़्यादा प्रैक्टिकल्स क्या हैं, गाइडेड रिस्पॉन्स, लाइक a trainer trains them or technician trains them that how to do the experiment, and they follow similar protocols to repeat that experiment. So mechanism is something on the high level, so it can only be assessed through OELs. So अपने करिकुलम में अगर आप मैकेनिज़्म को मैप करेंगे तो फिर आपको उसका एविडेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा. फिर आपने ये भी इंश्योर करना है कि आपके स्टूडेंट हर एक्सपेरिमेंट के लिए एक नया मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करते हैं. अगर ये नहीं कर सकते, सो डिज़ाइन द सिस्टम अकॉर्डिंगली. आपने जो साइकोमोटर में टैक्सोनॉमी रखना है
it should be maximum till 3 except OELs and your FYPs. For effective domain again 5 levels are there, लेकिन हम इसमें भी वैल्यूइंग तक जा रहे होते हैं। जो आगे के सिस्टम्स हैं, again assessment in effective domain is a real challenge especially for engineering students. So you must have a design set of rubric जिसकी बेसिस पे आप ये असेसमेंट कर रहे हैं। और जो इसमें पहले जो दो फेजेस हैं, रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग, दे आर इजी टू बी असेस्ड। वैल्यूइंग तक भी हम जा सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनलाइजिंग, they need a robust sort of exercise to through which you can affect these high levels in effective domain. कोर्स लर्निंग आउटकम्स की जो असेसमेंट होती है वो आपके मिड सेमेस्टर से, एंड सेमेस्टर से, लैब रिपोर्ट से, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से आ रही होती है। अगेन इसका भी आपने कोई केपीआई रखना है। हमने इसका 50% रखा हुआ है, आपने भी कोई रखा होगा कि जो स्टूडेंट है वो कितने नंबर लेगा ओएसटी में या एंड सेमेस्टर में, तो वो पास होगा। सो यू हैव अ डिफाइंड केपीआई फॉर योर सीएलओ एज वेल एज लाइक कि वो कितने परसेंट सीएलओ में मार्क्स आएंगे। So you will count that CLO as qualified and it will be contributing towards the attainment of the mapped program learning outcome. This is the evaluation of CLOs. Data is collected at the end of each semester. Evaluation and review is also done at the culmination of each semester. And CLOs are being assessed directly from courses through coursework and through rubrics for the psychomotor and affective part. CLOs के लिए भी दो बाइफर्केशन है, कोहॉर्ट और इंडिविजुअल की। अगर आपकी क्लास 60% क्लास एक CLO में फेल है, सो दैट्स अ मेजर अलार्म कि आपके उस ऑफर्ड कोर्स में कोई प्रॉब्लम है। अगर 60% नहीं फेल, आपका इंडिविजुअल फेल है, सो फॉर इंडिविजुअल देन मोस्टली द प्रॉब्लम लाइज विद द इंडिविजुअल के कई सारे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जो क्लास में CLO फेल करेंगे। देन यू विल हैव टू रिव्यू देयर चांसेस। जैसे पहले हमने कहा था कि उनका अगली क्लास में वही उसी PLO का CLO आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उसके सारे चांसेस ख़त्म हो गए हैं। जब सारे चांसेस ख़त्म हो गए हैं तो हम उसको स्पेशल स्टडी देंगे या कोई इंडिपेंडेंट असाइनमेंट देंगे। अगर नहीं हुए तो फिर हम उसको काउंसल करेंगे टू इम्प्रूव इन द फ्यूचर कोर्सेज मैप्ड विद द फील्ड PLO। CLOs में जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस रखी है वो ये है कि अगर 60% से नीचे हो तो फिर तो कोहॉर्ट पे फेलियर है। उसमें करेक्टिव एक्शन होता है, दैट इंक्लूड्स फैकल्टी एडवाइस बाय HOD, रिव्यू ऑफ लेक्चर प्लान्स, फैकल्टी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग, रिव्यू असेसमेंट मेथोडोलॉजी, रिव्यू ऑफ टैक्सोनॉमी लेवल्स, लेबोरेटरी एंड इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ का रिव्यू होता है इफ़ दे नीड सम इम्प्रूवमेंट, रिव्यू ऑफ अदर कोर्स रिलेटेड फैसिलिटीज़, रिव्यू और रिवीजन ऑफ कोर्स कंटेंट, या फिर द रिव्यू ऑफ इंटायर CLOs। अगर 60-70% है तो फिर भी हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, अदरवाइज 60% इज़ ओवर डिफाइंड KPI। 60 से भी कम होगा तो फिर कुछ करेक्टिव एक्शंस इन्वोक होंगे विच मे बी वन और मोर अमॉन्ग द इनलिस्टेड करेक्टिव एक्शंस। एक एग्जांपल के तौर पे ये एक कोर्स है इलेक्ट्रिकल इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पहले ऑफ़र होता था हमारे करिकुलम में। तो इसमें अगर देखेंगे तो एक कोर्स में एक जो अटेनमेंट है कोहॉर्ट लेवल के ऊपर, क्लास की अटेनमेंट फॉर CLO3 इट इज़ 59% विच इज़ लेस दैन आवर KPI विच इज़ डिफाइंड एज 60% फॉर द कोर्स। सो इसमें प्रोसेस क्या होता है कि एक करेक्टिव एक्शन फॉर्म जनरेट किया हुआ है। सो करेक्टिव एक्शन फॉर्म में हम प्रॉब्लम लिखते हैं कि जी ये CLO है, ये फेल हो गया है बाय दिस मच परसेंटेज। सो इसमें जो इनिशियल असेसमेंट है बाय फैकल्टी एंड द क्वालिटी enhancement cell, it is written that it was assessed that faculty member was unable to give appropriate time to the topic related to CLO3 due to lack of time management towards the end of semester. It was observed that CLO1, CLO2 was assessed multiple times while CLO3 was assessed only once in the end semester exam. So फैकल्टी और इस पे करेक्टिव एक्शन क्या हुआ है, फैकल्टी मेंबर वाज एडवाइज्ड बाय HOD टू मैनेज टाइम appropriately to cover entire course amicably in the allocated time. The faculty member was asked to review the teaching plan and accord appropriate time to culminating topics of the course.
Regarding assessment methodology, faculty member was asked to assess all CLOs multiple times, at least twice during the course of semester. Like आपके एक CLO की assessment अगर एक दफ़ा होगी तो आप स्टूडेंट को सिर्फ एक चांस दे रहे हैं टू क्वालिफाई दैट CLO. अगर आप एक CLO को एंड सेमेस्टर में भी कर रहे हैं, मिड सेमेस्टर में भी कर रहे हैं, असाइनमेंट में भी कर रहे हैं, so he will have multiple chances to qualify that CLO within your course. Similarly, there is another example and another corrective action form. This is how your CLOs are mapped with program learning outcomes. इसमें आपको courses नज़र आ रहे हैं टेबल में और ऊपर program learning outcomes नज़र आ रहे हैं. So आपके जो course हैं उनकी mapping हुई हुई है program learning outcomes के साथ, obviously through the design course learning outcomes. मूविंग ऑन टू द ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स या कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या होते हैं. प्रॉब्लम्स को मोस्टली हम तीन कैटेगरीज में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि एक ब्रॉडली डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं. ब्रॉडली डिफाइंड लाइक उसमें आपको जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्टीट्यूड चाहिए, वो कोई इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, ब्रेड नॉलेज से भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के लिए यू नीड टू हैव इन डेप्थ knowledge while solving that particular problem. In the slide, it's written an open-ended lab is where students are given the freedom to develop their own experiments instead of merely following the already set guidelines from a lab manual or elsewhere. So it will be invoking the reasoning, critical reasoning, problem solving, and evaluating skills of the students. Open-ended project need to think broadly and systematically and see the things in big picture. It should involve difficult decision, uncertain strategy, confusing idea, contentious product, and interactable change. The limitations which you can add while designing your complex engineering problem or open-ended lab should contain site condition, weather condition, availability of technology, building materials, design, costing, scheduling. लाइक आप उसमें कोई भी लिमिटेशन ऐड करके अपने सिंपल प्रॉब्लम को भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक अभी जो फ्लड आया हुआ है आपके एरिया में भी काफ़ी फ्लड. आई होप सिचुएशन इज़ बेटर नाउ इन योर एरिया. सो उसके हवाले से अभी जो मीटिंग्स चल रही हैं यहाँ पे, तो ये कोई रिलीफ यूनिट्स डिज़ाइन कर रहे हैं. सो 2 रूम्स के इन्होंने यूनिट्स डिज़ाइन किए हुए हैं. सो उसकी कॉस्ट एक लिमिटेशन है. दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट इन द रेंज ऑफ 1 to 1.5 मिलियन पर यूनिट. सो उसकी जो पहले जो इनिशियल कॉस्ट थी वो 3.5 मिलियन के अराउंड थी. तो जब हम उसे 1.5 मिलियन पे लेके आ रहे हैं, सो हमने उसके 5 ऑल्टरनेट्स बना लिए हैं कि LGS में अगर हम यूज़ कर रहे हैं LGS लाइट गेज स्टील, तो इसमें मिनिमम जो कॉस्ट है वो इतनी आ रही है स्ट्रक्चर की. अगर हम उसे ब्रिक मेस्टरी में इस सेटअप के साथ लेके जाएंगे तो इतनी कॉस्ट है. अगर हम उसे प्रीकास्ट मेंबर्स को यूज़ करके इस फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो इतनी कॉस्ट है. So I am designing different alternates which can make up for the limitation of cost to 1.5 million. So this is a sort of complex activity कि आपके पास कई solutions हैं. You are not restricted to a one pager or one specific sort of solution pathway. You have multiple pathways to reach towards your solution, and that is why we call it as an open-ended project or open-ended lab. ओरिजिनलिटी या ओपन एंडेडनेस का मतलब ये होता है कि इसमें या तो ओरिजिनलिटी प्रॉब्लम में होती है या उसके सोल्यूशन में कोई ओरिजिनलिटी या नोवेलिटी हम लेके आते हैं. सो किसी एक चीज़ में भी ओरिजिनलिटी आपके वो ओरिजिनलिटी या नोवेलिटी के कंपोनेंट को सफाइस कर देगी. वेदर की लिमिटेशन, एक आप कंक्रीटिंग की कोई रेसिपी देने जा रहे हैं, आप उसका वेदर कंडीशन चेंज कर दें, साइट कंडीशन चेंज कर दें, ऑटोमेटिकली वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा.
अवेलेबल टेक्नोलॉजी में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप कह दें कि जी हमारे पास टेक्नोलॉजी लिमिटेशन है, ये ऑपरेटर्स आप यूज़ नहीं कर सकते। तो जब वो ऑपरेटर्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, दे विल हैव टू फॉलो सम अल्टरनेट पाथ्स टू हैव दैट वैल्यू मेजर्ड थ्रू सम इनडायरेक्ट एवेलुएशन। तो वो अवेलेबल टेक्नोलॉजी या लिमिटेशन इन टेक्नोलॉजी can suffice the purpose for transforming your problem to the open-ended problem. बिल्डिंग मटेरियल्स, डिज़ाइन, कॉस्टिंग, स्केजुअलिंग, ऑल आर द लिमिटेशंस। आप टाइम के लिमिटेशन दे सकते हैं कि जी इस बिल्डिंग को हमने 3 दिन के अंदर खड़ा करना है, हमें रैपिड कंस्ट्रक्शन चाहिए, 3 दिन से ज़्यादा का टाइम हम नहीं दे सकते। सो दे विल बी सॉर्टिंग आउट सोल्यूशन कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ करें, कौन सी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी यूज़ करें कि हमारी सारी की सारी बिल्डिंग 3 दिन के अंदर फंक्शनल हो जाए। Again, to motivate the students, usually we link this problem with some sort of national or international competitions ताकि उनका interest level raise हो जाए। So concrete canoe competition, again floating concrete को हम यहाँ से link करते हैं कि अगर उन्हें मैं टास्क देता हूँ कि जी आपने floating concrete बनानी है, so अल्टीमेट एम इज़ कि वो एक फ्लोटिंग कंक्रीट की बोर्ड बनाने जा रहे हैं। सो बेसिकली छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं हैविंग डेंसिटी लेसर दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर विच कैन फ्लोट ऑन कंक्रीट। सो एक लाइट वेट, एक्सट्रीमली लाइट वेट पोरस कंक्रीट बनाने के भी देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल। You can achieve it through numerous solutions, so each one has their own strategy designed to have this solution possible. सिमिलरली एग ड्रॉप कॉम्पिटिशन्स, आपने वो जो बच्चों के छोटे बच्चों के कार्टून्स आते हैं उसमें भी वो एक छोटी सी आती है कि जी वो एग को ड्रॉप कर रहे हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस ट्राई कर रहे हैं। सॉर्ट ऑफ एग्जांपल है कि लाइक प्रॉब्लम इज़ दैट यू हैव टू ड्रॉप योर एग सेफली फ्रॉम सर्टेन हाइट. While doing so, you can practice different sorts of solutions. Similarly, for engineering, you have a problem which is simple, but you can add some constraints, and then those constraints will be making that problem challenging or open-ended for the students to approach the solution for that particular problem. Solar car racing, again from a mechanical engineering perspective, it has the potential for the open-endedness. ये एक एग्जांपल मैंने इंक्लूड की हुई है कंक्रीट के कोर्स से। अगेन एक बिल्डिंग का डिज़ाइन है, लाइक एक सिमिलर बिल्डिंग है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैंने उनको कह दिया कि जी नहीं, इस बिल्डिंग को उठा के इस साइड से इस साइड पे बनाना है, लेकिन उसमें आपने करना है क्या है, द फॉलोइंग मेथडोलॉजी इज़ टू बी फॉलोड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। यू नीड टू कैलकुलेट लोड्स ऑफ द प्लान बिल्डिंग, सॉइल सैम्पलिंग, bearing capacity evaluation, settlement calculations, propose suitable footing type. Like ये सारे के सारे स्टेप्स वो करेंगे। सॉर्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टचेस में आगे कि वो जियोटेक के लैब भी यूज़ करेंगे, फिर उसके डिज़ाइन पैरामीटर्स को लेते हुए फिर अपनी बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे। सो इट इज़ एन ओपन एंडेड प्रोजेक्ट. इट इज़ इनकलकेटिंग the component of open-ended lab through the experiments which they will be conducting in the lab for having the design parameters, and after having the design parameters जो इनके design calculations हैं, they will be targeting the cognitive phase of the project. अगेन इसमें मज़ीद लिमिटेशंस डालनी हो तो आप कहते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 30 मिलियन तक लिमिटेड है, टाइमलाइन इसकी ये है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने इससे कम रखना ही नहीं है, सेटलमेंट इससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, प्लेट लोड परफॉर्म नहीं हो सकता। ये सारी के सारी लिमिटेशंस ऐड की जा सकती हैं टू मेक इट मोर चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट्स. देन यू कैन डिफाइन द डिलीवरेबल्स, एंड ऑल दीज डिलीवरेबल्स विल बी लिंक्ड टू योर लर्निंग आउटकम्स ऑफ द कोर्स. लाइक आप इसमें से किस डिलीवरेबल को साइकोमोटर मान रहे हैं, किस डिलीवरेबल को कॉग्निटिव मान रहे हैं, किसकी मैपिंग कहाँ पे हो रही है, ये इंस्ट्रक्टर ने खुद डिफाइन करनी. अगेन एक कॉन्क्रीटिंग रिलेटेड एग्जांपल है कि मल्टीडिसिप्लिनरी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए कॉन्क्रीट की रेसिपी डिज़ाइन हुई है, लेकिन जब उसको लैब में जाकर टेस्ट की है तो वो डिज़ाइन रेसिपी 6000 की थी, लेकिन सारे के सारे जो रिजल्ट्स आए हैं दे आर लेस दैन 6000. सो व्हाट विल बी द प्रपोज सोल्यूशन कि हम इसे कैसे 6000 पे लेके जाएं. अब इसके भी कई सोल्यूशंस हैं, कुछ इकोनॉमिकल हैं, कुछ अन इकोनॉमिकल हैं. सो वो स्टूडेंट किस सोल्यूशन को ऑप्ट कर सकते हैं, तो आप इसमें सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमी के एट्रीब्यूट ऐड कर दें कि इन दो फेजेस को यू शुड बी कीपिंग इन माइंड वाइल
devising solution for getting the targeted benchmark of 6000 psi for that particular cylinder. तो वो दो पैरामीटर्स उसमें ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेंगे that they will render hundreds of alternate solutions possible to devise to reach at the design target. So those all those alternates will be contributing in polishing their thinking or their solution searching attributes. अगेन इसमें फर्दर डिलीवरेबल्स और कंस्ट्रेंट्स डाल के आप इसको कह लें कि थोड़ा वो तड़का लगा सकते हैं, मज़ीद उसको रिफ़ाइन कर सकते हैं, उनके मज़ीद चैलेंजिंग बना सकते हैं उनका सॉल्यूशन फेस। इसमें कुछ चीज़ें हैं कॉग्निटिव बेस्ड जो रिपोर्ट से आ रही हैं, एग्ज़ाम से आ रही हैं। यू कैन असेस ऑल दोज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ईजीली थ्रू पेपर। और उसके जो एविडेंस है, कल को कोई टीम आती है आपसे पूछती है कि जी आपने असेसमेंट कैसे किया, यू हैव योर कोर्स फाइल मेंटेन, यू कैन शो देम योर पेपर्स लाइक ही हैज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन विच इज़ मैप्ड टू दिस CLO और ये इसकी परफॉर्मेंस है, मैंने इसको ऐसे एवेलुएट किया है। लेकिन बाद चीज़ों का एविडेंस आप नहीं दे सकते। लाइक आप एक प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं एक स्टूडेंट की, आपके जहन में एक रूब्रिक बन जाता है कि ओके अगर ये इस तरह की प्रेजेंटेशन देगा तो मैं इसको इतना मार्क्स दूंगा 10 में से, इस तरह की देगा तो इतने दूंगा। तो यू हैव द रूब्रिक इन योर माइंड। OBE demands from you that you should take that rubric from your mind onto the paper। आपके जहन में जो भी उसके क्राइटेरियाज हैं आप उसे पेपर के ऊपर लिखें, फिर आप उनके क्राइटेरिया वाइज असेसमेंट करें, उसको टिक करें कि ये इसमें था, इसमें इसने जो लेवल अचीव किया था रीज़नेबली वेल था, इसमें एक्सीलेंट था। तो फिर उसकी काउंटिंग की बेस पे आप उनकी असेसमेंट करें जो कि एविडेंस बेस्ड असेसमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। सो रूब्रिक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक हॉलिस्टिक होता है, एक डिस्क्रिप्टिव रूब्रिक होता है। हॉलिस्टिक जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं दोनों रूब्रिक्स के, दे आर क्राइटेरियन और इंडिकेटर। सेकंड इज़ द लेवल ऑफ अटेनमेंट। अगर प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिकेटर आपके क्या हो सकते हैं, उसके जो बॉडी लैंग्वेज है ये एक इंडिकेटर हो सकती है, उसकी टाइम मैनेजमेंट उसकी एक इंडिकेटर हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्लाइड्स कैन बी एन इंडिकेटर। तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया हैं, ये इंडिकेटर्स हैं जो आप सेट करेंगे रूब्रिक के। लेवल्स ऑफ अटेनमेंट के उस इंडिकेटर पे उसकी परफॉर्मेंस क्या है। आप स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन पे उसे एक्सीलेंट दे रहे हैं, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो उसने कंटेंट उस पर लिखा हुआ है वेल अप्रोप्रिएट टू द टॉपिक। सो आप इन सारी चीज़ों को जो लेवल्स असाइन करेंगे दैट इज़ द लेवल ऑफ अटेनमेंट, सेकंड कंपोनेंट ऑफ योर डिज़ाइन रूब्रिक। वाई यूज़ रूब्रिक्स, इम्पोर्टेंस क्या है रूब्रिक्स की टीचर के लिए? तो ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह की असेसमेंट्स में हमारा मूड भी बड़ा इन्वॉल्व होता है। लाइक कि आप एक असेसमेंट करने आए हैं, उस वक्त जब आप बहुत थक गए हैं तो आपका जो लेवल ऑफ असेसमेंट होगा, जो पहली प्रेजेंटेशन असेस करेंगे, और जो अगर 40 बच्चों की प्रेजेंटेशन ली है तो जो 40th होगी, तो वो असेसमेंट ऑटोमेटिकली एक इंसान की नेचर है तो वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड होगी। सो अगर आपका रूब्रिक डिफाइन है, सो यू विल बी लुकिंग एट द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स, तो उन एट्रीब्यूट्स की मार्किंग आप सबकी कंपैरेटिव कर रहे होंगे। सॉर्ट ऑफ जस्टिफाइड मैकेनिज्म वुड बी देयर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ योर स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स के एंड पे ये होगा कि कल को वो पूछने आता है कि सर आपने मुझे 10 में से 8 दिए थे और फ़लाँ स्टूडेंट को 6 दिए थे, तो आप उसे शीट खोल के दिखा सकते हैं कि यार ये ट्रेट था जिसमें उसने पूरे मार्क्स लिए हैं, तुमने इस ट्रेट में डेफिशिएंट लिए हैं बिकॉज ऑफ सो एंड सो, उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, तुम्हारा ये प्रॉब्लम था, उसने वाइवे में अच्छा है। लाइक जो भी आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंगली आप उसको उसकी वीकनेस स्पेसिफाई करके बता सकते हैं कि यहाँ पे वीकनेस थी। So it clarifies the teacher's expectation of student performance, provide informative description of expected performance, help to monitor and critique the work. A student can monitor and critique his own work from the set of rubric, और वो उस पे डेफिशिएंसी को फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकता है कि मेरी प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है एग्जैक्टली। So this is analytic or descriptive rubric। ये एक detailed rubric है। Like we always recommend that your rubric design must be descriptive or analytic type of rubric instead of holistic। Holistic में again थोड़े से problems आ जाते हैं। उसका फ़ायदा सिर्फ ये है उसे डिज़ाइन करना आसान है,
इसके प्रॉब्लम्स हैं, अगर डिसएडवांटेज आप इसका एक देखेंगे वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग टू मेक दिस रूब्रिक, क्योंकि आपने क्राइटेरिया भी डिफाइन करने हैं 1 2 3 4, लेवल्स भी डिफाइन करने हैं 1 2 3 4 5। लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं, इट प्रोवाइड्स जजमेंट ऑन ईच क्राइटेरियन अकॉर्डिंग टू द ईच डिफाइंड लेवल। हॉलिस्टिक रूब्रिक में आपने क्राइटेरियन एक ही रखा है, एक ही क्राइटेरियन है, लाइक प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन एक ही है, उसमें आपने लेवल रख दिए कि बहुत अच्छी दी है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री दी है, कम अच्छी दी है, बड़ी ख़राब प्रेजेंटेशन है, तो वो आपने जस्ट लेवल डिफाइन किए हैं, क्राइटेरिया आपकी वो असेसमेंट ही है। सो इसका फ़ायदा क्या होगा, आपको टाइम सेव करेगा, लेकिन स्टिल आपके पास एक एविडेंस होगा। कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर द डिस्क्रिप्टिव रूब्रिक, यू मस्ट हैव डिज़ाइंड हॉलिस्टिक रूब्रिक फॉर द डिज़ाइंड एक्टिविटी, जिसमें आप कह सकेंगे मेरे पास ये एविडेंस है, ये लेवल्स थे जिसके अकॉर्डिंग मैंने इनकी असेसमेंट्स को कंक्लूड किया है। So this is for the two types of rubrics. This is an example of a descriptive or analytic rubric defined for the affective domain for the attribute of teamwork. So in this case, the criterions are conceptualization, ability to engage in team members, sensitivity towards group goals, conflict management, फिर उसके levels define हुए हैं। सो अब इसको डिज़ाइन करना थोड़ा सा टफ जॉब है स्टार्ट में, लेकिन जब डिज़ाइन हो गया तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन विल गिव यू द मोस्ट जस्टिफाइड सॉर्ट ऑफ analysis for the assessed performance which you are trying to predict out of that particular assessment or the activity which you are conducting in your department. This was all from my side. Your questions and answers are welcome. Thank you so much, Dr. Arslan. I have a question regarding the CLOs. Is there any limitation on the number of CLOs for each course? That how many CLOs can you keep? Like three, four, five? No, there is no limitation about the CLOs. You can even design 10 or 11 CLOs. But would you like to design 10 or 11 CLOs for your course? Obviously, like you will say that why I need to tackle 10 or 11 CLOs for my course. So, because if you look at the contents of your course, you will have major contents. If you write them in bullets, so they will make around, you can say, 12 to 15 bullets in total. So at least try to link 5 to 10 major bullets with each CLO. So for maximum, I'll suggest you can go for 6, you can go for 7, there is no limitation. But try to rationalize your curriculum with the defined CLO. There should not be such mapping that one topic is mapped with one CLO. If there is a CLO like that, so its attainment would be a problem, because if a student is failing that one topic, he will be failing a CLO. So he or she will be failing a CLO. So I'll suggest that the rationalized approach would be that design minimum 2 CLOs for a course, and maximum you can take up to 6 or 7 in extreme case. But that's a suggestion or recommendation from my side. Maybe the perception would vary from person to person. So it's up to you. But rationalized would be that you should map your topics with the design CL. Okay. And another question is regarding the mapping of CLOs to PLO mapping. So can a single CLO be used to map with the multiple PLOs? Like single CLO can be used to evaluate the multiple PLOs? Again, like we discussed in PEOs and PLOs, like is the attribute at program level, CLO is the attribute at course level. So maybe in some case you feel that this CLO can be mapped with this one and this one, but in that case you need to be focused, like towards which PLO it has dominant tilt or dominant mapping, and then that dominant PLO can be written as the mapped PLO for that specific CLO. So usually it is not recommended, or you can say it was a sort of compulsion. I am not updated about its recent scenario, but there was a compulsion that you can
map one CLO with one PLO, not the multiple PLOs. Okay, thank you so much. So I will request the other if they have any questions, free to ask the questions. Otherwise, I'll hand over the platform to the chairman. So any questions from the other faculty members? Yes, you are audible, and the participants are welcome to ask if there is any ambiguity or something they want to learn or ask. So the speaker is available to respond. So if there is any question, kindly ask. Otherwise, after 2 minutes, I shall conclude this session. I think the presentation was quite clear, and the faculty has learned a lot that how to properly implement the OBE system. I hope so, sir. It's not the other way around. So, if there is no any question, then I am going to thank Dr. Rao Salam Khushnood साहब. सर बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, टाइम निकाला और एक बेहतरीन सेशन जो है वो कंडक्ट किया. फैकल्टी की लर्निंग हुई है और फैकल्टी ने अच्छा पार्टिसिपेट किया. आई एम हैप्पी टू सी कि हमारे जितने मुझे एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट थे उससे ज़्यादा ही हमें मिल गए हैं. सो फ्रॉम माय साइड आई शैल बी वेरी मच थैंकफुल to Dr. Rao Arslan Khushnood if he is available in the future. If we have any difficulty, we may again uh, request him to deliver some webinar on any other important tool to implement the OBE system. And for this session, I am really thankful by heart to respected Dr. Rao Salam Khushnood on behalf of the whole faculty who attended this session. And now I hand over to Abdul Qayyum. You may kindly conclude the session. And Thank you. थैंक यू सो मच सर. लाइक बेसिकली ओबीई का नाम ही ये है कि म्यूचुअल लर्निंग है. लाइक हम भी आपको कुछ ब्रीफ करते हैं तो हमें भी सीखने को मिलता है. सो ये सेशन इट विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर एज वेल. कयूम से भी मैं इन टच होता हूँ. सो आपके जो भी कोई भी क्यूरी है, कोई भी बीच में हमारे भी लर्निंग चैलेंजेस होते हैं, तो कोई भी चैलेंज हो सो यू कैन एक्सेस मी थ्रू माई ईमेल. बाज़ औक़ात लेट हो जाते हैं हम रिप्लाई करने में क्योंकि ऑलरेडी वी आर कमिटेड इन मल्टीपल थिंग्स इन द डिपार्टमेंट. बट लाइक व्हाट्सएप पे अगर कर दें तो मैं उसको आई 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 ट्राई टू रिप्लाई टाइम. Abdul Qayyum, you may Okay, okay, also okay, thank to Dr. Rao okay. Arslan and then conclude the session, please. Okay, thank you so much, Dr. Sayed Naveed Rasha and Dr. Rao Arslan for your time for this valuable session. So the session was quite informative. I would request Dr. Arslan if he can share the slides so that I can circulate to the faculty members. I या think आई there's a शेयर question द from the मॉड्यूल्स. chairman.